Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May Allah's mercy and blessing be upon all of you. My dear students, in today's class we are going to learn sign of ism and fail. How to recognize fail and ism in Arabic language. For a beginner, sometimes it becomes very difficult to recognize fail and ism. Before I tell you how to recognize the ism and fail, first of all I would like to define what is ism. الاسم هو كلمة تدل على شيء محسوس أو غير محسوس، أي يدرك بالعقل لا باللمس دون دلالتها على زمن، مثل قولنا كتاب علم. In English we can say a noun is a word that denotes something concrete or unconcrete, or it can be understood by mind rather than touch without being tense. चलिए उर्दू में समझ लेते हैं। इस्म वो शय है जो किसी जामिद या गैर जामिद चीज़ पे दलालत करे। जामिद किसे कहते हैं? जो ठोस होती है। गैर जामिद जो ठोस ना हो या उसे हम महसूस कर सकते हों और उसमें तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना ना पाया जाए, यानी माजी, हाल और मुस्तक़बिल में से कोई ज़माना ना पाया जाए। मसलन मैं कहूँ किताब, तो ये एक जामिद चीज़ का नाम है, टेंजिबल यानी कॉन्क्रीट चीज़ का नाम है, और इसके अंदर कोई ज़माना नहीं पाया जा रहा है। नाउ वी विल लर्न एंड सी व्हाट आर दोज अलामातुल इस्म, आई मीन साइंस ऑफ नाउन। वी आर गोइंग टू सी द अलामातुल इस्म. If you want to recognize any noun in Arabic language, you must see these signs and these alamat. The very first sign is معرف باللام. معرف باللام means there must be alif lam. As you are seeing, alhamdu means alif lam is there, or it should be subjoined to something. So महफ़ज़तु क़ासिमिन, Qasim's purse or the purse of Qasim. So महफ़ज़तु over here is mudaf. So mudaf is the symbol of noun. Next one is it should be musnad ilay, जिसकी तरफ किसी चीज़ की इस्नाद की गई हो, जोड़ दिया गया हो. Over here मोहम्मद is musnad ilay, जिसकी तरफ सोने की निस्बत की गई है. कौन सोया हुआ है? Muhammad is sleeping. So Muhammad is musnad ilay. Or it should be tasniya. Tasniya means double. For example, rajulun se rajulani or rajulaini. So tasniya is the also symbol of noun. Or if you want to see any noun, it would be jama. Jama means plural. So rajulun se rijalun. Next sign of noun is it should be musaghar. Musaghar means diminutive. क़िल्लत या हक़ारत ज़ाहिर करने के लिए इसम में ख़ास किस्म की तग़यीर या तब्दीली करने का नाम तस्ग़ीर है। जैसे रजुलन से रुजैलुन। रजुलन का मतलब होता है आदमी, लेकिन जब हमें कहना हो छोटा आदमी या जब हमें उसकी हक़ारत बयान करनी हो तो हम उसे ख़ास किस्म के अंदर तब्दीली पैदा करके रजुलन से रुजैलुन कर देते हैं. सो डिमिनुटिव इज़ द सिंबल ऑफ नाउन टू रिकॉग्नाइज इट. नेक्स्ट वन इज़ इट शुड बी मंसूब. मंसूब एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल दिल्ली से देहलवी, इंडिया से इंडियन. नेक्स्ट सिंबल इज़ इट शुड बी अ मौसूफ. मौसूफ मीन्स पर्सन और थिंग, जिसकी कोई सिफत बयान की गई हो. फॉर एग्जाम्पल ओवर हियर इज़ सौबुन जमीलुन. सौबुन इज़ मौसूफ, अच्छा कपड़ा. और इट शुड बी मुनादा विच इज़ कॉल्ड अपॉन, जिसको बुलाया गया हो. जिस इसम पर हरफ निदा दाखिल हो उसे हम मुनादा कहते हैं, और वो भी अलामत है इसम की. और देयर शुड बी अ ज़ीर, इट मीन्स कसरा, on the last of that noun. For example, marartu bi ghulamin. So over here as you are looking, ghulamin is a noun because we are looking zir kasra bi ghulamin. Or you will see
tanween. For example, jidarun. Tanween is the symbol of noun. And last one is, there would be a ta mudawwara, round ta. For example, salihatun. So round ta is the symbol of noun. Now we will learn and see how to recognize fail in Arabic language. What are those signs to understand and recognize the fail? Before I tell you what are the symbols and signs of fail in Arabic language, I would like to define what is the fail at first. You must understand what is the definition of fail. تعريف الفعل. الفعل هو عبارة عن كل لفظ يدل على حدث في زمن معين. مثلا نصر. In English we can say verb is a word which denotes action and there should be a tense. उर्दू में भी तारीफ़ देख लेते हैं. फ़ेल वो कलमा है जिसके माना मुस्तकिल हों और वो अपने सेगे से तीनों ज़मानों में से किसी एक ज़माने पर दलालत करे. जैसे नसरा, मदद किया उसने गुज़श्ता ज़माने में. Now we will see what are those signs of fail. ما هي علامات الفعل? The very first sign is there must be قد. For example, قد سمع الله. Whenever you see there is a qad before any word, mark it as a fail. For example, قد سمع الله. Next, seen. Whenever you see there is a seen before any word, mark it as a verb. For example, سيقول السفهاء. سيقول السفهاء. So seen is the symbol of fail. Next one is سوف. سوف is the symbol of fail. It will be before a fail. For example, in the Quran, سوف تعلمون. It also changes the meaning and says अनकरीब तुम जान लोगे. तालमून तुम जान लोगे, but सौफ तालमून अनकरीब तुम जान लोगे. तो सौफा is the also symbol of fail. And you will see حروف جازمة before a word, forming words that makes فعل المضارع ساكن. وهي لم لما لام أمر لا नहीं in شرطية. For example, لم تسمع, you did not listen. So حروف جازمة is the symbol of fail. Whenever you see there is a حروف جازمة before any word, try to understand and try to recognize that this is the fail. When you see ज़मीर मरफू मुत्तसिल means nominative attached pronoun in the last of any word, mark it as a fail. ज़मीर मरफू मुत्तसिल वो ज़मीर हैं जो फ़ाइल बने और फेल से मिली हुए आए. फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़रबतु में तू जो आप देख रहे हैं वो ज़मीर मरफू मुत्तसिल है, ज़रबना में ना. इसी तरीके से तमाम 14 सीगों के अंदर. तो जब भी आप किसी लफ्ज़ के आखिर में इन ज़मायर का मुशाहिदा करें, तू, ना, तुमा, तुम, तुन्ना, तब आप समझ जाएं कि ये फ़ेल है. नेक्स्ट वन इज़ ताए तानीस साकिना, फेमिनिन ता विच रिमेन्स साकिन इन द वर्ड. फॉर एग्ज़ाम्पल, क़राअत, ज़रबत, फतहत. These are the example of ताए तानीस साकिना. And noon saqila and khafifa. Heavy and light noon is the symbol of fail. For example, layaqulanna, layaqulanna, or we can say layaqulan. These are the symbol of fail. जिस नून के आखिर में नून तशदीद हो उसे हम नून सकीला कहते हैं, जैसे लयक़ूलन्न. और जिस नून के आखिर में नून साकिन हो, जज़्म हो, तो हम उसे नून खफीफ़ा कहते हैं, जैसे लयक़ूलन. If there is a imperative sentence, for example, go, and negative imperative, don't go, it is called in Arabic amr or nahi. So at the time you would be able to understand and judge that this is the fail, because only fail can do this order. For example, idhab, go, la tazhab, don't go. Next one is, it should be a musnad. Musnad means जिस चीज़ की निस्बत किसी दूसरे की तरफ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, क़रअ हामिदुन, तो क़रअ मुस्नद है, तो जिस चीज़ की इस्नाद करते हैं उसे मुस्नद कहते हैं और जिसकी तरफ करते हैं उसे मुस्नद इलैह कहते हैं.
تو اس جملے میں قرأ حامد میں پڑھنے کی نسبت حامد کی طرف کی جا رہی ہے، تو جس چیز کو نسبت کر رہے ہیں اسے مسند کہیں گے، تو یہ فعل بنتا ہے، جیسے قرأ فعل ہے۔ لاسٹ ون از دیٹ اٹ شوڈ ہیو اٹس اون کنجوگیشن، اس کی اپنی گردان ہونی چاہیے۔ فار ایگزامپل ضرب ضربا ضربو ضربت، فعل فعل فعلو فعلت، اسے گردان کہتے ہیں۔ سو وین یو سی گردان، سو انڈرسٹینڈ کلیئرلی دیٹ اٹ از اے فعل، بیکاز اونلی فعل کین ہیو اے گردان۔